हेलो मित्रों। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड परसेंटेज या फिर परसेंटेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सो 20% ऑफ 140 हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग कैलकुलेटर। सो फॉर दैट केस विल स्विच ऑन टू द कैलकुलेटर एंड विल प्रेस फर्स्ट। हमें फाइंड आउट करना है 20%, सो विल राइट 20 मल्टीप्लाइड विथ 140. ओके, नाउ विल प्रेस shift and we'll hit equal to, you can see it here, equal यानी कि percentage. So if I hit this one, the answer is 28. So 24% of 140 will be 28. Fine. Let's take another example. For example, I have to find 30% of, let's suppose, 300. You can take any number. So process as usual. We have to find 30%. So we'll write 30 of 300. Now I will press shift and we'll press equal. So we'll getting the value as 90. Okay, so this is how you can find percentage of any number, even if it is given in the fraction also. Let's take one example on fraction. I have to find 7.25% of, let's suppose the number is 1500. Fine, let's start process. Same, 7.25% of multiplication में लिखेंगे 1500, press shift and then hit equal sign. So we'll be getting 108.75. 108.7. So this will be the first phase as finding percentage of any number. I hope you are getting it. In most of the university examinations, especially when you are dealing with the mathematics or mathematical related subjects, so mostly the questions could be इन अ फॉर्म लाइक दिस वन, या फिर हमें कुछ एग्जांपल में इसकी ज़रूरत भी लगती है, हमें इमीडिएटली परसेंटेज फाइंड करना होता है, सो वी गेट स्टक। तो इसके लिए ये ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक another example related with the percentage of any number. So let's take second category, as the question is what percentage of 880 is 660, यानी कि 880 के कितने परसेंटेज पे 660 आ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है, देखिए, हमें फाइंड आउट करना है 660 888 का कितना परसेंटेज में आता है। तो इसके लिए अगेन वील गो विद द ट्रिक एज फर्स्ट विल राइट 660, उसको हम डिवाइड करेंगे बाई 880, विल प्रेस शिफ्ट एंड विल हिट equal button. So if you see, it will show us the result as 75. That means 660 is 75% of 880. Okay. Let's take one more example on this. We'll reverse this question. So we'll write 28 is what percent of 140. Okay, यानी कि 28 जो है वो 140 के कितने परसेंटेज में आता है। उसके लिए सेम टर्म्स, टेक 28 divided by 140, press shift button and then hit equal. So our answer is 20. So this will be 20. Okay, so ये क्वेश्चन हमने रिवर्स किया था। 20% ऑफ 140 था 28, और 28 is what percent of 140 का आंसर है 20. So in this way you can easily find the percentage or the percentage parameters using the calculators. So if you practice it, it becomes quite easy. Thank you.